أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله تعالى بفضله تعالى وبكرم رسوله الأعلى نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم لقاؤنا هذا بمجلس مبارك نسأل الله تعالى أن يشرح لنا صدورنا بحلاوة حب حبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. Alhamdulillah ta'ala to be present here in this beautiful gathering of the Mawlid Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, arranged and presided by none other than our Honorable Hazrat Allama Maulana Hazrat Mahmudul Hasan Sahab Qibla Maddazilluh al-Ali. I was going to say the word Urdu word Khush Lihan, preceding his title of being Qari and Muqri. We've always enjoyed his beautiful voice, and the meeting with him has always been a very sincere, loving and caring one. From a long time going back to Walthamstow, where I used to make my weekly visits to deliver some youthful speeches. May Allah accept them, and to see the flourishing, beautiful scent of rose emanating from Walthamstow and its nearby regions through the efforts of our elders present here and decorating before us our munshideen and our amazing muqris, and also you will be benefiting from the presence of the ulama kiram. نسأل الله أن نستفيد منهم الفيضانات والبركات حبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه الليلة. Today, the verse I cited before you needs your attention. If you lend me your ear and your heart, you will enjoy it, inshallah. If you are distracted by things here and there of the dunya, then it will surpass, like when we were young, one thing enters through the ear and goes past the others. For a long time in the setting of iftar, we are always concerned about writing things in a manner that is absorbable and understandable. For 21 years being a secondary school teacher, you have to have aims and objectives. So my aim and objective is this verse of the Quran, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. अब इसके अलग अलग रंगत है, खुशबू है. Al-Quran yufassiru ba'duhum li ba'din. Quran की खूबसूरती ये है, its beauty is that you will spend all your life, and each time someone strikes the love of Rasulullah, you will see the jamal of these verses in a truly different way. And it is endless. No one can put a finger on it exactly. It is why it is the walking Quran, talking Quran, sleeping Quran. It is addressing you.
But the way you will see it is not by your own efforts, by your own knowledge, by your own community initiative, but by the love of your beloved Prophet Muhammad. So therefore, people ask, it doesn't mention anything in the Quran. The Quran doesn't mention anything. This is because the Ahlul Zahir only look at the Zahiri loves. But Batinis are those who looked into the Batini words and disregarded the Zahiris. And the Zahiris looked at only the apparent meaning and dismissed the spiritual meaning. So both of these groups became conflicting with one another long time ago. So then Abul Hasan al-Ashari rahmatullahi ta'ala alayh, al-Imam Maturidi rahmatullahi ta'ala alayh, they all got together. These ulama-i-kiram refined this ikhtilaf and brought it and merged it together so that you become Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So that you are able to keep the Zahir and keep the Batin. And those who kept the Zahir and not the Batin became the Khawarij, and those who kept to the Batin and not the Zahir, they became people of Ghulu and Iftira, and those people ended up becoming the category of Mu'tazila. This is not a session of theology, but however it is important, क्योंकि ये मसला अकीदे का है. There is no left and right. या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा. ये कोई बीच में रास्ता नहीं है. सुलह कुल्लियत का ये रास्ता नहीं है. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता है. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वाला तरीका है, जो बातिल को बातिल कहे और हक को हक कहे. So therefore, I want your attention. What do you know of Noor? Where is the journey of Noor? How long can you go? Do you take scientific understanding, or do you open your heart and strike into it the Noor that we know of? Why is there a group that has a problem with Noor? Why is it not sinking into them that Allah subhanahu wa ta'ala said, لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ. Had I not created you, I would not have created anything. Prior to that, why? Why did Allah subhanahu wa ta'ala say this? Why? Because before this, Allah makes an admission. كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا. I was a hidden treasure. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعْرَفَ. And then I decided that I wanted to be known. Not because I needed to be known, not because I am in need of being known, not because I am in need of those that I have created, because I am Rabb. I am Allah. I want people to know the beautiful Jamal of Rasul Akram sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. So in dono ahadith ko agar samajhna hai, now I want to bring you back to an even earlier version. What is the earlier version? Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Yasin says, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. When Allah subhanahu wa ta'ala wants and has made an intention for something, He merely says, Kun fayakun. And under the sharh of Lawh and Mahfuz, what is Lawh? What is Mahfuz? What is Qalam? Why refer Qalam as Qalam? People of dunya need Qalam. Why does Arsh need Qalam? Why does Allah subhanahu wa ta'ala need to explain to you the word Qalam when there is no existence of Qalam yet? Abhi Qalam की तो इब्तदा नहीं हुई, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल कुरान हकीम में नून वल क़लम वमा यस्तुरून की कसम खा रहा है. But Allah is taking the oath of Noon wal Qalam and wama yasturun. Yes, Lawh Qalam. When we come over here, what is the point?
The point is, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the qalam to write. The qalam said, "Oh my Lord, what shall I write?" Allah subhanahu wa ta'ala said, "Ma kana wa ma yakun." Ma kana yakun. अभी जो होने वाला है क़यामत तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन कलम तू तो अभी वजूद में आया है। तुझे तेरे वजूद से पहले जो चीज वजूद में थी वो नूरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दे कहानी। फिर मेरे सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में आएंगे। When he will come, he will say that kuntu nabiyyan, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आसमान और कहाँ, आसमान और जमीन के दरमियान या मिट्टी और पानी के दरमियान अभी थे। अब इस हदीस को समझने के लिए कितनी मदद की जरूरत है, इसीलिए कुछ लोगों के सरों से ऊपर गुजर जाती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह, if you are able to absorb this information by the use, by the help, by the assistance, इसको कहते हैं जिक्सो पजल। बच्चों को जिक्सो क्यों समझाया जाता है, एक्टिविटी क्यों दी जाती है? Why do children, why are they given the jigsaw puzzles? So that they are able to learn and develop their skills कि एक चीज को दूसरे चीज के साथ ताल्लुक किस तरह जोड़ा जाए। मेरे और आपके अव्वल अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने आंखों को खोला, फरमाया कि मैंने अर्श पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 40 साल के बाद अगर सबबे यानी लग़ज़िश, मिस्टेक नहीं, हम लोग गुस्ताख नहीं है, लग़ज़िश का लफ्ज आया है, गलती का लफ्ज नहीं आया है। लग़ज़िश अहले सुन्नत वल जमात के स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, इसीलिए तो हम बचते आ रहे हैं, वरना हम भी किसी की तरह कट गए होते। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्फाज सीखिए। मिलाद शरीफ की महफिल है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो अकायद हैं, नूर के मुताबिक जो अकायद हैं, अहले सुन्नत वल जमात के जो अक़वाल हैं, उन्हें आप अपने सीनों में इसको बंद कीजिए। कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, ये तो आपके लिए रब्बे ज़ुल जलाल ने एक वसीला बनाया है कि नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद को आप किस तरह इक़बाल कर रहे हैं, इस्तक़बाल कर रहे हैं, उसको किस तरीके से आप अपने दिलों में संजा रहे हैं। हाउ डू यू डेकोरेट the noor of the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam into your heart? So therefore, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका, अभी बात समझ में नहीं आई। अगर आपको मैं न पैदा करता तो मैं कुछ न पैदा करता। अभी बात समझने के लिए मुझे कहीं और भी जाना पड़ रहा है। कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, और मैं छुपा हुआ एक खजाना था। मैंने जाना, मैंने ख्वाहिश की कि मैं जाना जाऊं। अल्लाहु अकबर। फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, then I created the नूर of Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन अभी किस्सा खत्म नहीं होता है। इसी कुरान में वन नज्मी इज़ा हवा की भी बात हो रही है। आप मुझे बताइए, सितारा फूटता है, सितारा पैदा होता है, सितारा नाजिल नहीं होता। वकुल्ल शैइन, हर अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, जमीन, चांद, सितारे, सूरज, ये सब के सब तैर रहे हैं। दे आर गोइंग इन देयर ओन फ़क़द्दर लहुम आजाला। ये अक़ीदा तहाविया की इबारत है अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह तबारक तआला ने हर एक के लिए एक रास्ता मुकर्रर कर दिया। तो अल्लाह तबारक तआला ने जब रास्ता मुकर्रर कर दिया तो यहाँ पे क्या फरमा रहा है, वन नज्मी इज़ा हवा। और जब सितारा ढला, जब सितारा उतरा,
अल्लाह, कैसा सितारा, ये कौन उतरने वाली सितारे की बात हो रही है। तो फिर हदीस जिब्रील की तरफ आना पड़ेगा। एक वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जिब्रील कम उम्रक, ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र क्या है। फ़क़ाल जिब्रील ला अदरी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं मालूम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी उम्र कितनी है। हाँ, हर चौथे हिजाब में मुझे इतना खबर है कि मैं 70,000 साल के बाद एक चमकता हुआ सितारा देखता, चंद लम्हों के लिए वो नजर आता, कोई चीज न दाएं न बाएं, कोई चीज वजूद में नहीं, तो वही एक वजूद की जो चीज मुझे नजर आती और उसके इश्तियाक में मैं 70,000 साल के बाद इंतजार करता और इंतजार करने के बाद टिकटिकी लगा के महजूज होता। मैंने उस सितारे को 73,000 टाइम्स देखे हैं। फिर इसके जवाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इज्जतु रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, by the izzah of your Lord whose hand is in his hand, I am that glittering star. अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौकब नजम की तारीफ भी बता दी। The beloved Prophet Muhammad ﷺ has already introduced to us the meaning of the word najm, the word kawkab, that it is referring to. The beloved Prophet Muhammad ﷺ, the word قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ is referring to the beloved Prophet Muhammad ﷺ. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala ने जब बता दिया तो अहले सुन्नत वल जमात ने कलम अपना इसी पे ख़त्म कर दिया। अब इब्न अब्बास से बढ़कर कोई अगर आ रहा है तो वो दज्जाल है, याद रखिए दज्जाल है। If there is anyone who is above and claims to interpret this word nur to be other than Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, he is a blatant liar, a blatant liar and a blatant liar. He is not above and beyond Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, whose interpretation is قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ। ये एक नमूना हो गया आपके लिए कि जमीन पर आने से पहले स्टोरी क्या थी, कहानी क्या थी। इस आयत को, इन तमाम चीजों को अब आपने समझ लिया, ये रॉ मटेरियल अब आपके लिए है। अब आइए जर्नी, 3 जर्नी ऐसे हैं जो आपको, जो मेरे समझ में, क्योंकि हर टीचर अपने अपने अंदाज में हर चीज को बयान करता है। एवरी टीचर एक्सप्लेन्स इन हिज ओन वे, इन ए मुख्तसर वे, in a very brief way. Inshallah ta'ala, there are 3 things to my understanding that will help me and you understand the welcoming of the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And inshallah ta'ala, there are 3 things. Number 1, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. We're going to say, how is this connected to our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? And then there is this verse in which ahum khayrun am qawmu tub'in. Qawm tubba. Tubba al-awwal. Just like Pharaoh's the first, Pharaoh's the second, Pharaoh's the third. Tubba was also a king, and Tubba al-awwal is one of those kings that managed to destroy lots of countries around the regions that were causing imbalance. So he managed to succeed. And when he succeeded, what did he do? Uski kya khasiyat thi? He would select 4 scholars. He would select how many scholars? 4 scholars from that region, and he would move to the next area. From one area to another area, 3rd area, 4th area, the whole of this Hijaz region and area was conquered by Tubba al-Awwal. Finally, he turned from Yemen
and came to, because this was his markaz. His capital was Yemen. So Tubba al-Awwal made his journey and he came now with the intention to take over Makkah. But when he came to Makkah, he found that the people were not interested in him. They did not focus on him. They went about their daily duties. Allahu Akbar Kabira. This made him very upset. He's a king. Everyone lays their arms. आज के सियासतदान जो लोग हैं बड़े सियासत में उनकी बड़ी शौक है, अगर उनकी पजीराई नहीं हुई तो उनका जो नफ्स हमारा कितना तंग करता है उन्हें, हैं कि मेरी कोई किसी ने खबर नहीं ली, मेरी खातिर तवाज़ु नहीं हुई. So these are political angles as well. So he naturally felt into the same thing. When he came, he realized that no one gave him any importance. तो अब उसने दिल के अंदर इरादा किया, ये कैसे लोग हैं? What sort of people are these? I'm going to do away with this Kaaba that they go around. They are so proud, they are so arrogant that they didn't even realize that I'm here. I've conquered so many lands. So he intended in his heart to destroy the Kaaba. Okay? When he made that intention, straight away two things happened. He started to have a nosebleed and a very severe headache. He had now 4,000 scholars with him. Each and every one were scientific scholars. They were amazing scholars who knew how to treat things. 4,000 of the scholars were all exhausted, and one of the leader of them came and took him to one side and says, have you intended something wrong? Because we have exhausted every knowledge that we know to treat you and have failed to treat you. Therefore this azab or this whatever you are going through is not from Zameen, it is not from earth, it is Samawi. It is divine. And so he admitted, he made an admission that yes, I did, but I didn't do anything. I made an intention to destroy the Kaaba. He was suggested and he was advised that you should do repentance and tawbah. Look at this, he is Tubba al-Awwal, person of dunya. But he made the intention to do tawbah against something that he intended wrong against the Kaaba. As a result of that, immediately his headache stopped and his nosebleed stopped. Allahu Akbar Kabira. From that moment onwards, he is the first one that gave the tradition of Kiswa Kaaba. Kiswa Kaaba started from Tubba al-Awwal, 1,000 years before the beloved Prophet Muhammad Sarkar-e Dwan Sallam ke आमद से 1000 साल पहले जो किस्वे काबा, गिलाफे काबा जो बांधा जाता है, ये वहां से शुरू हुआ. और आज भी वो ट्रेडिशन उसको अलाइव किया हुआ है. अहले हिजाज या अहले सऊद जो भी आप कह लीजिए, मेरे लिए अहले हिजाज हैं. They still wrap the kiswa around the Kaaba. It is a tradition that keeps going on. That tradition has nothing to do with the beloved Prophet Muhammad. It has a tradition with Tubba al-Awwal from that time 1,000 years before the beloved Prophet Muhammad. So when he now took his troops and everyone to now a land called Yasrib. He came to this land called Yasrib because Yemen is from that side. So he intended to now make his journey. When he came, they stayed a day or two. So I'm wrapping up in a briefer way rather than in a more detailed way. So he came there and the scholars all asked the locals, what land is this? They said this is the land of Yathrib. The air over here is slightly foul, people get ill, etc. So they didn't have positive things to do. But the ulamas did not want to hear about the negatives. They needed to hear the confirmation that this is the land of Yathrib. This is the land of Yathrib. For them, they knew that the last prophet will come here, will settle here. 4,000 scholars made a united. आज हम बातें करते हैं मौलवी लोग, इमाम लोग, इख्तिलाफ नहीं. इल्म चीज ही ऐसी है
Knowledge is such that it cannot have ikhtilaf. Everyone united, 4,000 scholars all made the intention, tomorrow we will not leave this region. We have been waiting for this. We have been waiting generations after generation for this. Knowledge has transferred from my father to my father to my father and to us now. Now we have this excellent opportunity that we are not going to leave this land. The next morning they said that we are not leaving. Why? Have I not served you? Have I not taken care of you? Have I not provided everything for you? Yes, you have done all of those things. We have no complaints about that. But this is a place that we will not leave. Why? According to the scriptures, according to the signs, we find that the last Rahmatan lil Alameen will be born. He will be born and he will come and settle in Madinah to Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar Kabira. Nara Takbir! Nara Risalat! Nara Hadri! Amade Mustafa! Shirae Wadduha! Milad Mustafa! Jashne Eid Miladun Nabi! So you can now imagine, from here they decided they will not leave. Allahu Akbar. But Tubba already learnt his lesson. He knew that debating with the scholars is futile, it's not going to help. He actually did the opposite. He created, he made, and he arranged 4,000 houses to be built in that same city. Not only 4,000, but one double-story building. And this double-story building was to be a gift from him to Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam. And this scroll in which he wrote, do you know what he wrote? 1,000 years before the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he said, Bismillah Rahmanir Rahim, in the name of Allah, most merciful and most gracious. I, so and so, son of son such and such, king of Himyar, hereby declare that I believe in you, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In advance, he believed in the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and this is a house that I have built for you. Please honor it, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is why, when the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came, हालांकि बेशुमार साहबाए कराम थे, सबके सब चाहने वाले थे, सब मोहब्बत करने वाले थे, सबके सब चाह रहे थे कि उनके दर पे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हो, लेकिन नहीं, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ta'ala alayhi wa sallam रहमतन लिल आलमीन है। 1000 साल पहले जिस एक सहाबी ने उन पर गायबाना ईमान लाया, उनका क्या होगा? तमाम साहबाए कराम बुला रहे हैं, अब इसका फैसला क्या किया जाए? How do we make this decision? So the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam released his camel, and the camel went and sat in front of the horse of, in the house of Hazrat Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. So this is that same place Hazrat Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu received the scroll in his family. I'm just connecting these things because it is history, seerah. You need to know your beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. You need to know the history as well. ये ऐसा नहीं है कि बस फौरन इन लोगों ने शुरू कर लिया, सूफियों ने शुरू कर लिया, वगैरह कर लिया. नहीं. There is a big history. There is a big reason. And so, my dear elders and brothers, the purpose of this is for you to be able to understand that the birth of the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala designed that now, 1000 saal ke baad, the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, imagine the Sahaba Karam have received him by Tala'a al-Badru alayna min saniyyatil wada'i wajaba shukru alayna. Wajib hai shukr hamare upar. जब वाजिब का लफ्ज कह दिया, अब वाजिब सहाबाए कराम को शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने अहद को पूरा कर रहे हैं, जो 1000 साल पहले, 1000 years ago, someone had embraced Islam, embraced upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So this story, याद रखिए, कहानी जो है ना, उससे लोग मुतासिर होते हैं.
right? Your happiness on the basis of exciting everyone today. टीवी है, फिल्म्स हैं, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है. आप लोग 3-3 घंटे जो सुनते हैं, देखते हैं, चिपके रहते हैं. Why? It's on the basis of a story. If you cannot understand the story of the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then you will be stuck to Hollywood. Then you will be stuck to Bollywood. Then you will be stuck to Nollywood. Then you will be stuck to this dunya, this secularism and communism. Then, my dear elders and brothers, if you want to detach yourself from this dunya and attach yourself to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you need to know this story. It's होता है. And so, my dear elders, आखिरी last bit of connection. The beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is to be born 55 days before his birth. 55 रोज विलादत से पहले. फिर यमन से एक बादशाह निकला, अब्रहा अल-अशरम इसका नाम था. Again from Yemen, a king arose with the intention that this whole economic hub is going towards Mecca. Why don't people come towards our side? He wanted a big slice of the cake. He was a material king. And so he realized that nothing is happening. There is no change. People are still going that side. So he made an intention to take the best hatiyar, the best weapon. What was that? At that time, field. At that time, elephant was the most nuclear power element then. And so he came with the intention to destroy the Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala, no Nabi, koi Nabi abhi nahi, koi khizri wali abhi nahi. अहले बैते अतहार यानी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान, his father, grandfather, in their presence. बात असल में ये नहीं है. कुरान शरीफ में ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद. Let them come, whoever come. This is not the time for anyone to come and destroy even one brick, one stone of Makkah. Why? Because this is the time now that in the womb of Amina is Sayyidina Habibuna, Amina ke lal, Ruhi Fira, Janab Ahmad Mustafa, Muhammad Mustafa, Sallallahu Ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala intervened in this way. Otherwise they would have been demolished. तो ये भी सेलिब्रेशन का दिन है कि नहीं? आपके मुल्क को कोई अटैक करे, वहां से बैक वक्त आजादी मिले, कितनी बड़ी बात है. How important it is for you. मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं. जिस सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाना था, उससे पहले अब्रहा अल-अशरम ने मक्कतुल मुकर्रमा को ख़त्म करने की इंतहा कर दी थी. यानी सिर्फ इरादा ही नहीं बल्कि फील के जरिए से, हाथियों के जरिए से खित्ते मक्का के बाहर मुज़दलिफा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सर कहते हैं. वादी मुहस्सर ये वो जगह है जहाँ जल्दी से गुजर जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि अल्लाह का अजाब यहाँ आया था. यानी तैरन अबाबील, अल्लाह तबारक व तआला ने अबाबील के जरिए से फील, अहले फील को ख़त्म किया था. So this connection, why am I saying, कुछ लोगों को नजर ही नहीं आती चीज. आप चुने हुए लोग हैं, आप आशिकीन हैं, आप सरकार के गुलाम हैं. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. हम अपने नबी के दीवाने, हम अपने नबी के, हम सब नबियों के दीवाने. Alhamdulillah. This is a grace from Allah subhanahu wa ta'ala that He has allowed your heart without difficulty to accept the wiladat to Nabi sallallahu alaihi wasallam.
विलादत के लिए दलील क़ती की कोई ज़रूरत नहीं, विलादत है ही दलील, विलादत है ही दलील कि रब हमारा मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। यकीनन कोई और पैदा नहीं कर सकता, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। So the creation of our beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, there is no need for dalil. Why? उनका पैदा होना, उनका जागना, सोना, ये है ही मिलाद। न मिलाना न मनाना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई दलील नहीं है कि वो मक्का की किसी गोशे में पैदा हुए थे। इसका मतलब ये है कि हम नामो निशान सब मिटा दें, बस एक सुनी हुई कहावत है। इसका मतलब ये है कि 1,000 years के बाद आपके बाल बच्चों को पता ही नहीं होगा कि दीन हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पता नहीं कि कौन कहाँ पे क्या है। युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो अपने अफवाहों के जरिए से आपके दिल के अंदर अल्लाह की अता की हुई फैज़ व बरकत, रहमत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो मिटा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं, आप कायम रहें इंशाअल्लाह ताला। तिम्मू नूरिही वलौ करिहल काफिरून, उस नूर को जो आपके दिल के अंदर है अल्लाह तबारक ताला मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचाएगा, वलो करिहल काफिरून। हाँ, अल्लाह तबारक ताला हमें उनमें से रखे, अल्लाह तबारक ताला हमें ये समझ दे, कनेक्शन करने की ज़रूरत है। हर इंसान के नमाज में हम कनेक्शन करते हैं, तो ये भी जितने भी अहादीस हैं ये कोई इल्मी इर्तिफा वगैरह की बात नहीं है, सिर्फ कनेक्ट करने की बात है। हर उस्ताद का अपना रंग होता है, वो अपने अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक ताला ये समझ आ जाए, ये अकीदा महफूज हो जाए, हमारा भी बेड़ा पार। मुझे नाचीज़ के लिए भी दुआ ज़रूर फरमाइएगा, काबिल तहसीन है। Worthy of many congratulations for arranging a beautiful gathering. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a beneficial one for us all. Jazakumullah kulla khair. Barakallahu. Thank you. MashaAllah.